What is formula for electric field intensity due to point charge? Formula for intensity due to point charge? One upon 4 pi epsilon naught q by r square. Correct. 1 upon 4 pi epsilon q by r square is perfect. And formula for intensity near charge sphere? Formula for intensity near charge sphere? 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Charge cylinder lambda upon 2 pi r epsilon. Charge conductor sigma upon epsilon. Charge infinite sheet sigma upon 2 epsilon naught. Force acting per unit area near charge conductor? half epsilon naught e square. Half k epsilon naught into e square. Energy stored per unit volume? Same formula. Same formula we have done, correct? हेलो Yes, sir. अभी एक 3 और फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं इंटेंसिटी का, फिर लास्ट में सब इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक साथ लिखाता हूं आपको। ये आपको पूरा बाहट करना है। नेक्स्ट लेक्चर पहला वाइवा होगा आपका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला वी आर डूइंग। 12th में हम लोगों को स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो मैं डेरिवेशन करूंगा, आप लास्ट टाइम खाली लिखना टू सेव द टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज distributed on thin conductor. Charge distributed on thin conductor. That means if this is thin conductor, on its axis near to it we have a point P at a distance A from the nearer end. It is having uniformly charge distributed on the body. Intensity at this point. If charge is point charge, we know intensity. Any other charge, we have to use certain mathematical process to get the answer. So whenever charge is distributed, we say let lambda be charge per unit length of conductor. So if total charge is q and length, total charge is q and length of conductor is L, then we can say lambda is charge upon length or dq upon small length dx, both are same. So if I consider a small point charge dq which is on distance dx of the conductor at distance x from point P. So intensity at point P at distance x from charge dq, which is point charge, general formula will be 1 upon 4 pi epsilon naught charge dq upon distance x square. 1 upon 4 pi epsilon में k लिख देता हूं, थोड़ा फास्ट होगा। फिर ये पूरे को इधर से लेके इधर तक, मतलब इधर से ये पॉइंट ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करूंगा। Can you tell me what is distance of this end from A, from point P? A है ना, A का डिस्टेंस P से कितना है? A. B का डिस्टेंस -a. सेंटर से नहीं बोल रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत हो। From this point end A to point P, distance is A. From B to point P, what is distance? X plus a. X plus x से
डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस यहां से माप रहे हैं ना आप, तो ये पूरे का लेंथ l है, तो a प्लस l ले सकता हूं ना, b का डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस a है, ठीक है। और कोई तो एक डिस्टेंस पॉइंट dq है, जहां से इंटेंसिटी p पे फॉर्मूला आएगा 1/4π dq अपॉन x स्क्वायर, लेकिन वो x ये a से लेके a प्लस l तक लेके जाना है। देखो डाइपोल नहीं है कि डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, वन एंड से अदर एंड तक चार्ज है। तो इधर जब भी चार्ज होगा तो डिस्टेंस a है, इधर जब चार्ज होगा तो डिस्टेंस a प्लस l है। पहले आप इतना लिख लो, चलो लिखो, नहीं तो भूल जाओगे आप सब। फिर लास्ट में मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, आज पूरा इंटेंसिटी क्लियर करने वाले हैं, फिर उसके ऊपर ही कुछ सम भी सॉल्व करूंगा टाइम मिला तो। Write the heading, electric field due to charge on conductor. Electric field due to charge distributed on tin. देखो इस साल मुझे लग रहा है एटलीस्ट 50% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला होगा, वेयर फॉर्मूला में भी डिफिकल्ट वन। से मैंने आप लोग को बोला था प्लीज सबमिट द फ्री टाइमिंग्स और द टाइमिंग्स वेयर यू आर नॉट फ्री। खाली एक या दो जन ने भेजा, बाकी लोग ने नहीं भेजा है। फिर जब मैं फ्री रहूंगा तो एक्स्ट्रा लेक्चर अनाउंस कर दूंगा, चलेगा आपको? हाँ सर। जब भी मैं फ्री आपको बोल दूं एक्स्ट्रा लेक्चर, आप बैठ जाओगे? नहीं नहीं ना, जब आप फ्री रहोगे तब मुझे रखना चाहिए ना लेक्चर। तो मैं आप लोग का फ्री सर I've sent. हाँ, टू और 3 स्टूडेंट्स हैव सेंड, प्लीज सेंड इट ना। देखो हम लोग जब एक्चुअल मिलते रहते हैं ना, सब फटाफट बात होती थी, ये वर्चुअल मिल रहे हैं, सो इफ यू डोंट कोऑर्डिनेट प्रॉपरली तो कैसे होगा? एक्स्ट्रा लेक्चर रखने के लिए टीचर सोच रहा है, लेकिन आप टाइम नहीं बता रहे। फिर कोई भी टाइम बोलेंगे तो आप बोलोगे हमारा कुछ ना कुछ है प्रोग्राम। चलो कंप्लीट हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो, कोई बता सकता है मुझे शाश्वत, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r? What is electric field due to point charge at a distance r? 1/4 pi epsilon q upon r square, करेक्ट। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हमको मालूम रहता है, बाकी सब डिराइव करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq at distance x from p comma de equals to k dq upon x square। सबको ये बात समझ में आ गया? दिस k is not डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पूरा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट को लिखा है मैंने। सबको समझ गया इधर तक? यस सर। अच्छा, पर हमको तो पूरे कंडक्टर का इंटेंसिटी चाहिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी comma e is integration of all dE from closest distance a to a plus l. Limit of integration, any doubt, Gargi? नो सर। Okay, now dE is k dq upon x square a to a plus l. This equals to, k is constant. Can I write dq in terms of lambda and dx? Lambda is dq upon dx. So wherever I see dq, can I write lambda dx? Yes, sir. Reason because x is variable, तो मुझे dq वेरिएबल में आंसर नहीं मिलेगा, dx वेरिएबल में मिलेगा। तो मैंने कन्वर्ट किया लैम्डा dq अपॉन dx।
Lambda means linear charge density, which is charge per unit length. Now K constant, lambda constant. X raised to minus 2 dx from A to A plus L. So this will become K lambda. What is integration of x raised to 2? X raised to minus 1 on minus 1, no? Abhi this equals to K lambda minus 1 upon x. Is it correct? From lower limit to upper limit. Is it correct till this? Yes, sir. K lambda. अभी पहले अपर वैल्यू डालना है which is a plus l, बाद में माइनस साइन minus of 1 upon a final answer. So this will become k lambda minus minus plus 1 upon a, पहले लिख लेता हूं, minus of 1 upon a plus l. So formula for electric field intensity due to thin conductor at any point on its axis is k lambda 1 upon a minus 1 upon a plus l. Thin conductor on its axis, it is k lambda in bracket 1 upon a minus of 1 upon a plus l. Lambda means total charge upon total length. Any doubt in this formula? Hello, any doubt? No, sir. No. Yes, sir. So mostly if it comes in the exam, directly if you recollect the formula, you can substitute the values. ऐसे आएगा. Please write down. Time लगेगा चलेगा, lecture ज़्यादा लेंगे हम लोग. समझ के करो. Once you have completed, please guide me so that I will clear and start with new derivation. Done, sir. Everybody has completed till last line. Can I clear it off? No, sir. Yes, sir. एक सेकंड सर. अच्छा अच्छा आराम आराम. Next is also one of the beautiful sum based on which derivation they had asked you the numerical in the exam. MCQ, second one. Electric field due to charge on semi-circular ring at its center. At center O. So this is semicircular conductor, or you can say ring. At center O, we are interested in intensity. Charge is distributed on its body throughout. So again we'll say lambda is charge per unit length. Lambda is total charge upon length, or it can be taken as small charge on small length, meaning same. Because in ratio, you can take 1 by 2, you can take 10 by 20, you can take 100 by 200, all are same. Now I know only formula with point charge. Then for other charge, I will integrate. So generally, we'll take a point charge.
So let dq be the charge on arc of very small length dl, arc of very small length dl, it subtends very small angle d theta, such that arc is at angle theta from the one side. अब इधर तक डायग्राम कुछ टेंशन है? अभी देखो आर्क थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन आर्क इतना छोटा है कि पॉइंट जैसा ही है, तो ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो ये एंगल लो, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. So at angle theta, I have considered one arc which is subtending angle d theta at center. Till this, any doubt? No, sir. What is direction of intensity from positive charge? Outward, na? Yes, From positive charge, intensity will be outward. So this is intensity due to charge dq outward. I'm calling it as dE because total charge is not q, it is not dq, it is E. तो ये थीटा, ये एंगल कितना होगा बोल सकते हो आप? थीटा ही ना, theta. वर्टिकली ऑपोजिट. तो इसका दो कंपोनेंट, so this will be dE cos theta and this component will be dE sin theta. ये vertically opposite angle हो गया. We got dE cos theta along horizontal and d sin theta along vertical downward. That means if I consider a semicircular ring to be charged uniformly with linear charge density lambda, then lambda is q by L, or you can write dq by dl. Here L मतलब ये लेंथ पाई r, कितना है लेंथ बता सकते हो आप पूरा? ये लेंथ सेमी सर्कल का कितना होगा इफ यू टेक रेडियस एज r? पाई r. लेंथ मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, ये लेंथ जो पाई r हो सकता है. इतना लिख लो. चलो डायग्राम बनाओ और इतना लिखो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ d को कैसा इंटीग्रेट करें. Consider semicircular ring to be charged uniformly with linear charge density lambda. Therefore, lambda is total charge q upon total length L, which is here pi r or dq by dl. Done. Okay. Let dq be the elemental charge. Let dq be the elemental charge on elemental length dl. dq be the elemental charge of elemental length dl at an angle
theta, at an angle theta. dq with elemental charge on elemental length at an angle theta. तो उसका वजह से इंटेंसिटी dE directed outward which will have two component cos and sin. फिर हम लोग देखते हैं दोनों कंपोनेंट बचेगा कि एक हाथ कैंसल हो जाएगा. Let dE be the intensity due to charge dq. It is directed outwards as shown. It can be resolved into two rectangular components dE cos theta and dE sin theta. dE cos theta and dE sin theta. Now if I consider, imagine करता हूं इधर एक मिरर रखा है बीच में, मिरर, तो इसका ही जैसा जुड़वा भाई इधर मिलेगा ना हम लोग को. So for every elemental charge there is elemental charge as mirror image which will give intensity in outward direction, ऐसा ना, जिसका वापस horizontal and vertical component होएगा. horizontal will cancel each other, तो बचेगा क्या, खाली vertical वाला, क्या नहीं. Yes, sir. ठीक है, इधर तक लिख लो बेटा, लिखा यहाँ था. So it can be resolved into two rectangular components d cos theta and d sin theta. इतना लिखो, फिर मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ ये मिरर वाले का. ठीक है, all horizontal components will cancel due to mirror elemental charge. Due to mirror elemental charge, all the horizontal components will cancel. Now right hand side का write up, can I clear it off? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो हमारे पास अब बच गया खाली वर्टिकली डाउनवर्ड वाला, जिसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है एक एंड ऑफ रिंग से दूसरा एंड ऑफ रिंग तक. जो भी वेरिएबल होगा वो आपको लिमिट ढूंढना पड़ेगा. एंगल वेरिएबल होगा तो एंगल ढूंढना पड़ेगा, डिस्टेंस वेरिएबल होगा तो डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, चार्ज वेरिएबल होगा तो चार्ज ढूंढना पड़ेगा स्टार्ट से एंड तक. नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी is due to vertical components. Therefore, E is integration of all vertical component, which is dE sin theta. dE means K dQ upon radius, which is distance of this charge from the center. So radius square into sin theta. dQ I can write as lambda dl upon r square sin theta integration. See, K is constant, lambda is constant, R is constant, dl is variable, theta is variable. तो इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल नहीं चलेगा, तो मैं या तो dl रखूंगा या तो थीटा रखूंगा. dl मतलब ये आर्क लेंथ,
डू यू नो व्हाट इज आर्क का लेंथ? एस इक्वल टू आर थीटा होता है ना। Yes, sir. अपना आर्क तो डीएल है, तो डीएल को मैं आर थीटा लिख दूं, जिसमें आर कांस्टेंट होएगा, थीटा एक वेरिएबल आ जाएगा, चलेगा ना, आर डी थीटा। Yes. चलो ये अभी रब करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड करूँ रब, लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम। Yes. Yes, sir. So resultant intensity is only due to vertical component. Therefore, it is integration of dE sin theta. dE is k into dq upon distance r square. dq is lambda into dl. अभी dl को एलिमिनेट करने के लिए आर्क लेंथ dl is r into d theta सब्स्टिट्यूट करूंगा. So k is constant, lambda constant. This is dl. dl is actually arc length. So dl is r d theta. That means s equal to r theta वाला formula. So r d theta sin theta upon r square. एक r cancel. So we get k lambda upon r तीनों constant. Sin theta d theta. So if you take this ring का एक एंड से दूसरा एंड, तो यह पूरा एंगल कितना होगा? 0 से स्टार्ट होके पाई होगा क्या नहीं, है ना, 0 से पाई. Yes. k Yes, sir. lambda by r, integration of sine is minus cos theta from 0 to pi. That is k lambda by r minus cos of pi minus of minus cos of 0. What is cos 180? Minus Minus one. 1. Minus 1. So k lambda by r minus of minus 1 minus minus plus cos 0 1. तो ये बच गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2. तो 2k लैम्डा बाय r. ये डायरेक्ट आंसर आपको रिंग के सेंटर के लिए डालना. ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग, नॉट रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग. कॉपी. पूरा रिंग का 0 हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है. अभी थोड़ा इमेजिन कर सकते हो क्यों 0 होगा रिंग का. ऊपर वाले का आउटवर्ड आया डाउनवर्ड, तो नीचे वाले से ऊपर हो जाएगा ना समांतर, तो इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा. At the center of semicircular ring, the intensity is 2k lambda by r, directed vertically downwards.
Done? Full? Yes, sir. What is angle subtended by semicircular ring at center? Angle subtended by semicircular ring at center. Angle subtended by semicircular ring at center. 90 degree. नहीं 180 होगा ना. 180. 90 कैसे 180 होगा ना. पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है ना, तो आधे का 180 होगा ना. 180 होगा ना. हेलो. तो मैं भी एक जनरल फॉर्मूला निकालता हूँ. एक आर्क होगा जो कोई भी एंगल अल्फा है, तो जब भी आपको ऐसा मिला तो अल्फा का वैल्यू देख लेना, 90 है क्या, 45 है, 60 है, 180 है, डायरेक्ट आ जाएगा. तो जनरल केस करते हैं. मतलब इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क विच सबटेंड्स एंगल अल्फा एट सेंटर. जनरल केस. Intensity due to arc charged uniformly with positive charge having linear charge density. फिर से वही story, lambda. We want intensity at its center if it is subtending angle alpha. Can you see there will be mirror image from the central point? फिर से left right left right left right है ना. Hello. Yes, sir. So if I consider this elemental arc of length dl having charge dq, which is making very small angle d theta, मतलब ये negligible angle है. So from this side, suppose it is vertical से भी जाता हूँ, क्योंकि ये पूरा inclined है ना, तो y axis से suppose ये angle theta है, क्योंकि x axis full नहीं है. So intensity due to this positive charge will be directed outward again ऐसा, which can be again resolved into two component. ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट DE sin थीटा एंड वर्टिकल वाला DE cos थीटा. ठीक है. हेलो. Yes. Yes, sir. तो इंटेंसिटी along x axis will be integration of all DE sin theta, and intensity along y axis will be DE cos theta. I hope you followed this much. Yes, sir. Here again we have mirror elements. mirror elements mirror element मतलब ये dq जैसा इधर बाजू में, तो इसका फिर से ऐसा बाहर निकला, अगर ये डायरेक्शन ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा. So here we have mirror elements which will cancel horizontal component, which will cancel horizontal components. Therefore, resultant intensity will be only along y direction, will be E along y direction because x is cancelled, which is integral of d cos theta. Idhar tak please write it. Then I'm explaining about limits of integration.
All horizontal component got eliminated because of equal opposite. So resultant is only due to y, which is here this time d cos theta. Done, sir. Okay, very good. Now dE means और dq वाला चार्ज की वजह से इंटीग्रेशन. So E is integration of k into charge is dq, distance is r square into cos theta. K is constant. This is lambda into dl upon r square into cos theta. Lambda is also constant outside. dl is nothing but r d theta. dl matlab arc length. Arc length is r into theta. Angle is small, so we have taken d theta. R square cos theta, 1 r cancel. So we get k lambda cos theta d theta, r constant I am bringing outside. See, this time we have taken this way line, and this is that angle. So if I take this angle from here to here, ये वाला आर्क का ये पूरा अल्फा है ना, ये पूरा एंगल इतने आर्क का, ये अगर अल्फा है तो ये साइड वाला कितना होगा, अल्फा बाई 2 ना. ये आर्क लिया था हम लोग ने, जिसने एंगल अल्फा बनाया, इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था, तो आधा वाला एंगल अल्फा बाई 2 लेफ्ट में, अल्फा बाई 2 राइट में, ऐसा दो एंगल हो जाएगा ना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Whenever you are having left to right about any axis, then mathematically it is called minus alpha by 2 lower end and plus alpha by 2 from upper end. मतलब ये साइड वाला पूरा नेगेटिव और ये वाला पूरा पॉजिटिव, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. Whenever you divide angle into two parts such that it is having left and right, so all left is taken negative, right is taken positive. So limit of integration is minus alpha by 2 to plus alpha by 2. Now cos theta ka integration I know from maths. This is k lambda by r, cos is sin theta minus alpha by 2 to plus alpha by 2. So k lambda by r sin of alpha by 2 minus of sin of minus alpha by 2. K lambda by r sin alpha by 2. Sin minus theta is minus sin theta, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. Sin alpha by 2. So k lambda by r 2 times sin of alpha by 2. So my arc wala intensity is 2k lambda by r sin alpha by 2. अगर ये सेमी सर्कल के लिए याद करके 180 डालू तो साइन 180 अपॉन 2 कितना होगा, इज इट साइन 90? 90. And Yes. sin 90 is 1, so answer is 2k lambda by r. Okay. अगर एंगल 90 है तो 90 by 2, 45 degree. 45 डिग्री मतलब कितना, 1 अपॉन रूट 2. 1 upon 1 अपॉन रूट 2, 2 से जब भी डिवाइड होएगा तो रूट 2 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, है ना. Yes, sir. So this way you can do for any angle subtend, any arc subtending angle alpha at the center. Yes, Dhairya, you have any problem? No, sir. Right derivation. See, this all in state board you didn't had these topics, but because NCRT based we are having our syllabus, they can ask you the questions where
Directly formula you should remember, not the derivation. तो एक फॉर्मूला आ गया हम लोग को ये जनरल 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 फॉर आर्क एंड फॉर थिन कंडक्टर एक्सिस पे याद है तो k लैम्डा इन ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस l. Done, sir. Can I clear this now? If everybody is done? Yes, sir. Done. तो अभी आपका वो पेपर का भी डाउट्स क्लियर हो गया ना, ये कैसे आया था वो 2k लैम्डा बाई आर. Yes, sir. एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ये भी, फिर उसके बाद इंटेंसिटी रिलेटेड सब खत्म हो गया. खाली कोई स्टूडेंट को चाहिए था कि नॉन कंडक्टिंग होगा तो कैसे इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला आता है वो समझा देता हूँ, फिर पूरा लिस्ट देता हूँ, फिर मैं पोटेंशियल पे जाऊंगा, फिर सारे खत्म हो गए इंटेंसिटी वाला पार्ट. दिस इज अ थिन कंडक्टर, नॉट सिलेंडर बट द थिन कंडक्टर. एक्सिस पे अगर रहता तो फॉर्मूला आपको पता है, a बोले k लैम्डा इन ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस ऑफ 1 अपॉन a प्लस है. नाउ पॉइंट इज हियर, नॉट नेसेसरी एट द सेंटर, किधर भी है. सो दिस इज वन थिन कंडक्टर, thin straight conductor having total charge linear density lambda. So total charge is q on length l, इसका length है l. So if I want I can write lambda is total charge q upon l. If I take small length then it will become dq upon dl. बस इतना lambda दोनों लिख सकते हैं. So consider thin conductor, straight conductor to be charged uniformly with positive charge having linear charge density lambda. L is the total length of the conductor. P be a point at a distance a near the conductor. Not necessary center में, किधर भी हो सकता है. Let dl be the elemental length having charge dq. This much also followed. This dl will have very small angle subtended here. Second. At distance dl is a elemental length which subtends small angle d phi here. R is the distance of dl from point P. So intensity at point P will be directed this way outward
I am calling this as DE, which will have two components, horizontal and vertical. So if we take this angle, this as angle phi, then this will be phi, this will be DE cos phi, and this will be DE sin phi. Now see, there will be no cancellation because सबका field ऐसे ही होगा. Hello? इधर तक any doubt for anybody? No, sir. No, sir. इतना डायग्राम पहले बनाओ फिर आगे करता हूँ. ये आपका सिलेबस में स्टेट बोर्ड में फिर से नहीं था. Done, sir. ओके. Please wait, sir. हाँ हाँ बेटे. ये इधर से एक्सट्रीम पे एंगल बना रहा है सपोज फ्रॉम सेंटर. Done. This upper end is making angle, let us take theta 1 and lower end is making angle theta 2. ये ऐसा आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलने वाला है. उधर ऐसे आएगा फाइनाइट कंडक्टर पॉइंट P, टॉप एंड से थीटा 1 एंगल, बॉटम से थीटा 2. अगर किसी को याद है फॉर्मूला तो ऐसा है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2. इसका भी कुछ ऐसी टाइप का आएगा, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा. Now if you have completed, I will clear the diagram and write the entire expression again. Completed, sir. कंप्लीटेड ना. तो डीएल को हम लोग ने ये पॉइंट से मान लीजिए एल की डिस्टेंस पे लिया है. आई मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ डायग्राम. चलो फिर से हॉरिजॉन्टल, अभी डायरेक्ट कंसीडर वाले नहीं बोला मैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज EX equals to DE cos phi is also called as E perpendicular, that is actually perpendicular to length. तो कभी कभी वो सिंबल दे देंगे फाइंड E perpendicular for this conductor. मतलब ये लेंथ को परपेंडिकुलर यही है ना x एक्सिस. तो ये पैरेलल मतलब ये y एक्सिस. So sometimes they can ask you find the component perpendicular to the length. That means indirectly you have to find EX. Vertical component is EY equals to D sin phi. Is also called as E parallel. That means parallel to length. एक कंपोनेंट पैरेलल टू लेंथ है, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ है, जिसका मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए. इतना लिख लो, फिर मैं परपेंडिकुलर और पैरेलल का दो एक्सप्रेशन ढूंढता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जनरली इसके लिए दोनों अलग अलग पूछते हैं. Once you complete then tell please. Sure, sir. हो गया ना, रब कर दो.
Can you suggest what will be DE का formula? K dq upon distance r square. Is it correct? यही है ना, ये इस पे ये लिया था dl जिस पे dq है r के डिस्टेंस पे फ्रॉम p, तो वही फॉर्मूला आ गया ना, k dq by r square. ओके. Yes, sir. ये r कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है? Constant. नहीं, Constant variable. वेरिएबल है. क्यों? कोई डीएल इधर ले सकता है, कोई डीएल इधर ले सकता है, कोई डीएल इधर ले सकता है, तो हर एक का आर अलग अलग आएगा ना. वो सेंटर पे किधर भी आप लो देखो फिक्स था आर, लेकिन इधर तो आर अलग अलग आएगा ना. तो कहना इसे यहाँ पे आर वेरिएबल है. ओके, हेलो. Yes, sir. आर वेरिएबल हो गया. तो आर वेरिएबल डीक्यू पे वेरिएबल नहीं चलेगा ना, कोई तो एक मुझे निकालना पड़ेगा. तो अगर ध्यान से आपने डायग्राम देखा है तो ये डिस्टेंस था ए विच वॉज पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये आर था एट एनी डीएल, और ये एल था, ये एंगल हमने नाम दिया था फाई. सो फ्रॉम दिस फिगर वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना आना चाहिए. व्हाट विल बी कॉस ऑफ फाई? ए इज कांस्टेंट एडजेसेंट साइड अपॉन आर. तो आर, हाँ, तो आर वेरिएबल हो गया ए अपॉन कॉस फाई. अभी इसमें खाली एंगल वेरिएबल है, ए तो कांस्टेंट है. करेक्ट. सी देखो, आपको चाहिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल चलेगा. तो यहाँ पे डी क्यू और आर स्क्वायर दो वेरिएबल है, ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कांस्टेंट है. तो मैंने ट्राई किया आंसर को कांस्टेंट में निकालने के लिए, तो कांस्टेंट आया ए अपॉन कॉस फाई इन टर्म्स ऑफ आर. तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा डीई इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन ए बाई कॉस फाई का स्क्वायर. दैट मीन्स डीई इक्वल्स टू के डी क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर. एनी डाउट टिल दिस? एनी डाउट? हेलो. No, sir. अभी देखो फाई वेरिएबल है, डीक्यू वेरिएबल है. डीक्यू वेरिएबल तो कितना देर से निकाल रहे हैं हम लोग? इट इज लैम्डा टाइम्स डीएल, एंड डीएल इज टू बी नाउ एलिमिनेटेड. तो डीएल एलिमिनेट कर दिया तो काम हो गया, लेकिन ये डीएल डायरेक्ट नहीं आएगा बिकॉज सर्कल नहीं चाहिए. तो अगेन आई कैन सी फ्रॉम द फिगर एल, दिस इज एल एंड ए इज कांस्टेंट. सो कुछ रिलेशन है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट में. tan phi is opposite side upon adjacent side. So L will become A times tan phi. Therefore, derivative is dl A into sec square phi d phi. तो अब जिधर वेरिएबल dl है उधर मैं थीटा वाला वेरिएबल डाल दूंगा, तो मुझे मेरा पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल दैट इज एंगल फाई मिलेगा. तो इधर तक आप करो, फिर मैं आगे का समझाता हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार अच्छे से पढ़ना, लिख के प्रैक्टिस करना. आज का दिन 1 घंटा इन्वेस्ट फॉर राइटिंग ओनली फॉर्मूलाज. चैप्टर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बिकॉज फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, इससे डिफिकल्ट. ये और ऑसिलेशन एक जैसा है, बहुत फॉर्मूला. सो दिस वी गॉट डी क्यू डीई वेर डी क्यू एंड आर इज वेरिएबल. फर्स्ट आर वेरिएबल है रिमूव फ्रॉम दैट फिगर, फिर फॉर्चुनेटली एक ही वेरिएबल था, लेकिन डी क्यू को लैम्डा डीएल, फिर से एक वेरिएबल आ गया डीएल. तो डीएल को निकालने के लिए tan phi यूज किया. Exactly same you are going to have magnetic field at point P near finite long conductor. एक ही बार आया है इस पे का सम. Just complete till dl equals to a sec square phi d phi.
Yes, Trupti completed. Tanmay, Gargi, Swaswat, Arfat. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is sec and cos? Are they reciprocal of each other? So sec square phi and cos square phi cancel हो जाएगा, खाली d phi बच गया. So now I got dE as k lambda upon a. All three are constant. D phi is variable. So therefore E perpendicular वाला component, perpendicular मतलब x axis वाला, is dE cos phi का integration from angle lower side is minus theta 2 along y axis, ऊपर वाला plus theta 1. To take limit of integration, if you are going along x and y axis, lower is negative, upper positive, left is negative, right is positive. This is convention we are using for angles. So we can get now answer for E perpendicular by substituting this value of dE. K lambda by a d phi cos phi from minus theta 2 to plus theta 1. So k lambda by a cos phi is sin phi from theta 2 to theta 1. That is k lambda by a sin of phi theta 1 phi के जगह पे minus of sin of minus theta 2. So this is k lambda by a sin of theta 1 plus sin of theta 2 is perpendicular component to the conductor. देखो मुझे तो खाली ये फॉर्मूला है, वो एग्जाम में आपको ऐसा देंगे पॉइंट P, ये एंगल 30, ये एंगल नीचे 60, फाइंड व्हाट इज ई परपेंडिकुलर. तो k लैम्डा बाई a साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60. जिसको मालूम है वो तुरंत कर देगा, नहीं मालूम है तो रॉन्ग ऑप्शन डालेगा. ओके, कंप्लीट टिल दिस. We got k upon lambda sin theta 1 plus sin theta 2 is perpendicular to the conductor wala component. E perpendicular is x component, that is d cos phi, uska integration.
Or Yes, sir. can I clear this completely? Hello? Yes, sir. Now E parallel, that is E along Y wala, will be DE sine phi from minus theta to angle to theta 1. So this is K lambda by A into d phi sine of phi from minus theta 2 to plus theta 1. That is K lambda by A sine phi ka integration is minus of cos phi from minus theta 2 to theta 1. That is K lambda by A minus of cos theta 1 minus of cos of minus theta 2, cos of minus theta 2. So K lambda by A minus cos theta 1, hello, minus of this minus will become plus cos of minus theta is cos theta. So ये just उल्टा आ गया थोड़ा. This is cos of theta 2 minus cos of theta 1. So two formulas we got. One was K lambda by A sine theta 1 plus sine theta 2. Other is K lambda by A cos theta 2 minus cos theta 1. Complete till this, then all the list of formula for intensity I am writing on the screen. All intensity is over now. Done, sir. Done, sir. Now I'm clearing this and writing all the formulas from starting regarding intensities. List of formulae for electric field intensities. First, due to point charge at a distance r, E is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square.
due to dipole, intensity at point on the axis is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. P is distance. Suppose we call this as 12. 12 into any one charge. So this is negative charge, positive charge, intensity at equator. So intensity at equator is 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube. इसका direction याद रखना, from negative charge to positive charge direction, from negative to positive. Here parallel to positive charge to negative charge. And here if it is positive outward, negative inward. Done? Written all the three? Yes, sir. So again electric dipole, but point is at a distance r on the line making angle theta. So E at any point E at any point due to dipole E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube root of 3 cos square theta plus 1, and its direction is given by tan alpha is half tan theta. मतलब ये पॉइंट इधर है, ये किधर, यहाँ किधर होगा, अल्फा एंगल. Okay. Intensity at center of semicircular ring equals to 2k lambda by r for any r equals to 2k lambda by r sine of alpha by 2. 2k lambda by r sine alpha by 2. Conductor, straight conductor, point is near end is A, total length is L, so this length is A plus L. E is k lambda
1 upon a minus of 1 plus 1 upon a plus. Written? Yes, sir. Upon length L, linear charge density lambda. That point P at a distance A, this two component, this is called perpendicular, this is called parallel, that is Ex, Ey. E perpendicular equal to Ex equal to K lambda by A sine of theta 1 plus sine of theta 2. E parallel equals to Ey, that is K lambda by A cos of theta 2 minus cos of theta 1. रिंग वाला लिखा देता हूँ, टाइम नहीं है, समझाता हूँ थोड़ा देर के बाद. लाइन से जा रहा हूँ इस पर रिंग का. At any point on the ring. At a distance x from ring. This E is K Q x upon R square plus x square raised to 3 by 2. At center x is 0, therefore E will be KQ 0 upon R square plus 0 square raised to 3 by 2. So E equal to 0. So for ring, intensity at center is 0. At distance x, it is kqx upon root r square plus x square raised to 3 by 2. हाँ सर, लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं जी. अब बोर्ड का तो नीट का बोल रहे हैं सर, आप बोर्ड का बोल रहे हैं. बोर्ड का तो नहीं, बोर्ड का सर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर ही चेंज हुआ ना. तो एक हाथ ये कोई सैंपल पेपर मिलेगा आपको नवनीत का, और दूसरा चेतना पब्लिकेशन का. चेतना पब्लिकेशन का और नवनीत का, दो का. हाँ, लास्ट ईयर से पोर्शन चेंज हुआ है. इस साल इनफैक्ट टॉपिक नया होगा, पैटर्न से. हाँ, तो आप एक बार वो चेक कर लेना, नहीं तो जो या तो आपको टारगेट का भी मिल जाएगा. टारगेट 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 स्पेसिमेन पेपर.
तीन में कोई भी ले लेगी, टारगेट भी चलेगा, डेटा पब्लिकेशन भी चलेगा, नो भी चलेगा। हाँ, पर टारगेट का सबसे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बराबर होगा। सर कर रहा है, उससे मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि उसका कैसा है 12th और नीट दोनों वीक है ना, तो दोनों के लिए पहले 12th परफेक्ट किया हमने, अब नीट वो धीरे धीरे करेगा, पर वो करेगा क्योंकि टाइम मिल गया ना हमको। 12th कर दिया है। नहीं 12th उसका अच्छा हुआ है, वो पेपर सॉल्व कर लेगा 5-6 तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा 12th नहीं करना है। मैंने उनको क्या बोला कि अब आप मैक्सिमम नीट पे ध्यान दीजिए, जैसे ही डेट अनाउंस होगा 1 महीना पहले फिर से 12th पे आ जाना। हाँ, 1 महीना बहुत इजी होता है क्योंकि 20 तो पहले एमसीक्यू होते हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर एमसीक्यू छोड़ देंगे तो वो नहीं होगा, लास्ट में थ्योरी रट के हो सकता है। ओके, yes completed. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me at infinity what is x at infinity? Very large or very small? Very large. बहुत लार्ज है ना, तो अगर x का Yes. वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रहा है मतलब बहुत बड़ा है, तो आर Yes. स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 कैन बी रिटन एज ओनली इन्फिनिटी, करेक्ट ना? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो खाली इन्फिनिटी रेज टू 2 रेज टू 3/2 यानी कि इन्फिनिटी रेज टू 3 बचेगा। Yes. तो E which is k q x upon r square plus x square raised to 3/2 for ring, then denominator if it is only infinity, anything upon infinity is what? Not defined. हाँ, मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड, जीरो हो जाएगा ना, 1 upon infinity, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन 1 upon infinity तो जीरो होता है ना। हेलो, Yes. तो ये r को निग्लेक्ट करूं, खाली मुझे यहाँ मिला x क्यूब, तो ये बच गया था अपना k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप k क्यूब अपॉन इंफिनिटी लिखोगे, आंसर जीरो में। मतलब याद रखना फॉर रिंग E इक्वल टू 0 दो जगह पे है, एट सेंटर एंड एट इंफिनिटी, बाकी जगह पे k क्यूब x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. what is the intensity at any point on the axis of ring? K q x upon r square plus x square raised to 3/2, but at center 0, at infinity 0. Okay, Zero. write this much. Shall I clear this now? Yes, sir. Yes, sir. For charge sphere, ये चार चीज के लिए कौन कौन सा टाइप का स्फीयर है इसमें? हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग एंड हॉलो, दोनों चार चीज के लिए, सॉलिड, हॉलो, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग का सेम फॉर्मूला और सॉलिड कंडक्टिंग का ही, एट पॉइंट आउटसाइड, that means r is greater than capital R, E is 1/4 pi epsilon naught q by r square, at point on surface where r equal to r,
E is 1 upon 4 pi epsilon naught q by capital R square. At inside, that means R less than R equal to 0. तीन फॉर्मूला आ गया. अभी फिर नॉन कंडक्टिंग का बताता हूँ तीन फॉर्मूला. इनसाइड आउटसाइड का सेम, सरफेस का सेम, खाली इनसाइड का अलग होता है. So for charge sphere, whenever only this much is given, it means it can be hollow conducting, hollow non-conducting, or solid conducting. Have you completed full? Yes, sir. Yes, sir. Then electric field due to non-conducting solid sphere. First, at point outside, means distance is greater than radius, E is 1 upon 4 pi epsilon q by r square. Same formula. On surface, means r equal to capital R, E is 1 upon 4 pi epsilon q by capital R square. Same formula. Third, at inside, वहां पे 0 आया था, ये 0 नहीं है. At any point inside, E can be written as, आपको मैं शॉर्ट में डिराइव करके बता देता हूँ. At inside, by Gauss's theorem, फिर से एक बार डिराइव कर देता हूँ. By Gauss's theorem, Q inside upon epsilon naught is flux, which is also equals to E into area on the closed surface. So Q inside is nothing but, if you take rho as charge per unit volume, so Q inside will be nothing but rho into volume of the sphere 4 by 3 pi r cube Gaussian sphere upon epsilon naught equals to E into total Gaussian surface area. Surface area will be 4 pi r square. ये समझ में आया क्या किया? मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग. यहाँ पे मैंने गॉसियन स्फीयर बनाया, तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा? चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर 4 by 3 pi r cube, और इसका सरफेस एरिया 4 pi r square. So you will get 4 cancel, pi cancel, r square cancel from both sides. So we get E equals to rho r upon 3 epsilon naught. This is formula for intensity any point inside the non-conducting sphere. इसको अगर टोटल चार्ज में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा आ जाएगा. E is total charge is present in this total sphere. So it will be Q upon 4 by 3 pi r cube into r upon 3 epsilon naught. 3 कैंसल हो जाएगा, तो ये बच गया Q upon 4 pi epsilon naught r upon r cube. अगर Q में निकालोगे तो, रो में निकालोगे तो रो r upon 3 epsilon naught. Please write down this much. आज इतना करता हूँ, सब रिवाइज कर लेना. थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैं टाइमली कंप्लीट कर दूंगा आपका पोर्शन, बट भागा के नहीं कर सकता हूँ.
Just in 2 more lectures, entire theory will get completed. See, I have sent one PDF for you all in the common group. 1 to 30 sums you have to try. That is your homework from the PDF. हाँ धैर्य, क्या हो गया? बार बार आप नाम देखा रहे अपना। सर वो गलती से पेन से क्लिक हो गया और इसलिए वो ठीक है, ठीक है। Done, sir. Everybody has completed all the 4 formulas here. Can I clear now? Yes, sir. आज इतने ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर और लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए।